हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग बोर्ड्यू को कंटिन्यू कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था हैबिटस एंड फील्ड। सो टुडे विल डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट गिवन बाय बोर्ड्यू इज अबाउट कैपिटल। बेसिकली कैपिटल शब्द को हम लोग हमेशा कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। इट गिव्स एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जिसको हम आर्थिक पूंजी कहते हैं। तो कैपिटल मीन्स यूजुअली हम इकोनॉमिक सेंस में समझते हैं, but the idea of Bourdieu is different from the idea of capital from Karl Marx. It's not simply the economic resources, it is something beyond that. और ये जो कैपिटल है आपको इक्विवेलेंट टू इकोनॉमी बट नॉट इक्वल टू इकोनॉमी, it is equivalent to resources but not equivalent to economic resources. Why? Because this capital also gives benefits or privileges that can help equally as we get help from the economic resources. तो जो पूंजी की बात हम लोग करते हैं, that how this idea of capital Bourdieu wanted to relate with different aspects like social, cultural, symbolic, political, ये सारे जो जितने भी अदर इश्यूज है बियॉन्ड इकोनॉमिक कंसेप्ट, उस बारे में बोर्डियू अपनी कैपिटल्स को एक्सटेंड करके बताना चाहते हैं। Why? Because it has a relationship with society that sometimes your economy as a capital may not applicable or may not required to get the benefit. So there are alternative way also to get benefit without economic capital. इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी हमारे पास आर्थिक रूप में अगर पूंजी कम है, बट हमारी और जो समाज से जुड़ा हुआ चीजों जैसे कास्ट, रिलीजन, पावर, पॉलिटिक्स, इंटरेक्शंस रिलेटेड टू योर नेटवर्क, वो भी आपको एक पूंजी की तरह काम करता है. सो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कैपिटल एज अंडरस्टूड बाय बोर्डियू. तो जैसे कि मैंने कहा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू बोर्डियू: सोशल कैपिटल, economic capital, cultural capital, symbolic capital, and all are important. In terms of social capital, when we have the social networks, relationship and connections. I can give you example. Suppose somebody wants to go first time to Dubai or Singapore, but if your friend is there, if your relatives are there, your cousin brother or sister is there, so you feel comfortable to reach there, to travel to a new place. इसका मतलब हमारी अगर कोई नेटवर्क है, किसी भी कंट्री हम जा रहे हैं, पहले से कोई जानने वाला, पहचानने वाला, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार है, तो हमारे लिए एक नई कंट्री को पहुंचना और उस जगह पे किसी भी तरह चीजों को जानकारी लेने में कंफर्टेबल ज्यादा रहता है. So that becomes the capital in terms of your networks. So it is not simply about the network, it can be also related to your community, caste, relationship, anything. For example, if you go first time to United States of America and you first find a Indian restaurant या किसी Indian taxi driver, so you feel comfortable to travel to India from our country, so that becomes a social capital that in America you got a driver or taxi driver who is from India also. Even within India, suppose you are from one specific state, West Bengal or Kerala or Tamil Nadu, or even Eastern Uttar Pradesh. So if you find the individual who is from that place, so that means you become more comfortable to travel, to do something related to in a new place. So that means your community, it can be from your state, it can be from your religious background or caste background or regional background, that also acts as a capital. So वो भी कहेगा हाँ ये हमारी जगह से है, ये हमारी बिरादरी से है, ये हमारी कम्युनिटी से है. So that becomes a social capital
unlike those who are not similar to that type of background. तो जानने वाला या किसी भी नेटवर्क अगर किसी के साथ है तो उस जगह पे हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है, एक एडवांटेजेस या पॉजिटिव कंडीशंस क्रिएट होता है, सो दैट बिकम्स द सोशल कैपिटल। देन अनदर इंपॉर्टेंट कैपिटल के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक कैपिटल, प्रतीकात्मक पूंजी। इस प्रतीकात्मक पूंजी को यहाँ पे हम लोग कैसे एक ऑनर, प्रेस्टीज या रिकॉग्निशन, सपोज somebody is identified as बादशाह, तो हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान को बादशाह की एक सिंबॉलिक जो रिकॉग्निशन है उससे हम पहचानते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसको हम सरोजिनी नायडू या लता मंगेशकर, मेलोडी क्वीन या किंग ऑफ म्यूजिक, क्वीन ऑफ म्यूजिक, या किसी भी तरह ऐसा रिकॉग्निशन है जैसे बिग बी, तो अमिताभ बच्चन को ही समझते हैं। So that becomes the symbol that has a relationship with that your importance, your honor, your prestige, your recognitions. So हमारे पास जब एक व्यक्ति या किसी स्पेसिफिक जगह में एक सिंबलिक मीनिंग है और ये उसकी मीनिंग उस जगह की इम्पोर्टेंस को बढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से दैट बंगलोर इज अबाउट द गार्डन सिटी और software city, or you can say Chandigarh, say Rose City, or the Stone Park City, Bhubaneswar, the Temple City, जयपुर पिंक सिटी। तो ये जितने भी सिंबल्स है उसके साथ जुड़ा हुआ उस कैपिटल की, उस सिटी की एक रिकॉग्निशन। तो जैसे हम लोग लखनऊ शहर को कहते हैं नवाबों की शहर, सिटी ऑफ नवाब एंड कबाब, सो दैट रिकॉग्नाइज्ड tehzeeb culture, that recognize that how the Lucknow city has a relationship with some types of recognitions with different symbolic terminologies. Those symbols gives another important dimension to understand the importance of that city, important that object, important that to the individual. तो ये भी हमारे लिए एक कैपिटल है जब हमें ऑनर मिलती है किसी सिंबल के माध्यम से। जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ आवर कंट्री, सो मिसाइल मैन। जैसे ई श्रीधरन को कहते हैं मेट्रो मैन, तो मेट्रो को पहचानने में ई श्रीधरन जो दिल्ली मेट्रो से शुरुआत हुई थी, सो दैट बिकम्स द सिंबल्स that we recognize as one individual, so that becomes our capital. Then economic capital, as it is very much similar to that idea of Marxian capital, the resources, the financial resources, the material resources, material possessions. तो हमारे पास ये सारे चीज जो इकोनॉमी के या प्रॉपर्टीज या रिसोर्सेस है, ये सारी चीज हमारे व्यक्ति को, हमारे एजुकेशन को, हमारे हेल्थ को, ये सारे सर्विस, सारे सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है या एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। सो दैट मीन्स if I am very much good in terms of the resources economically, so I can afford the expensive education, better health care, or anything luxury items. So that means economy becomes a supporting aspect of the individual, even if you talk about your family, a city, a state. So economy also helps to give better infrastructure, better services, better facilities. So that becomes the economic capital. It has a relationship with financial resources or जो हम मनी से या पैसा से जोड़ के या के प्रॉपर्टी से जोड़ के बात करते हैं। So another capital, that is cultural capital. This is important. Why? Because it is also an idea that how the individual or the state or the city or any place which has a relationship with the cultural heritage or cultural knowledge. So that means if I belong to Ayodhya, so I carry the idea of Ram or Purushottam, Raja Ram, or the Dasarath Raja, whatever the attached to the Ramayana, it has a relationship with the culture. So that explains that special
part of that history, even we are explaining with anybody, then you feel proud that हम उस संस्कृति से, परंपरा से बिलोंग करते हैं जहां भगवान राम की कहानी या कथा रची हुई है, जिस जगह से उनकी जन्म हुआ है। तो उसी तरह मथुरा और वृंदावन को हम कहते हैं ये कल्चर जो हमें उसकी नॉलेज और उसकी जो इम्पोर्टेंस है तो हमारे से जुड़ी रहती है। तो जैसे हम कहते हैं जब पुराने एजुकेशन सिस्टम्स में नालंदा, तक्षशिला, ये सारे सिस्टम्स में जो जो एजुकेशन की बात करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट कल्चरल कैपिटल की तरह हमें यूज करना पड़ता है अपने दैनिक जीवन में। Then also the skills that attach to that culture, जैसे हमने कहा लखनऊ की चिकन की काम है, कढ़ाई की काम है, बनारस की बनारसी साड़ी है, या साउथ कॉटन है, या वेस्ट बंगाल की कोई स्वीट्स है, तो ये जो सारे जो इम्पोर्टेंस है उस शहर का, उस स्टेट का, उस व्यक्ति का, that is part of that important history to explain or to understand the particular place or the individual. तो ये जो कल्चरल कैपिटल की बात करते हैं उसमें तीन चीजों के बारे में बोर्डियू डिस्कस करते हैं। एक कहते हैं एम्बॉडीड, और एक ऑब्जेक्टिफाइड, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। Cultural capital is one of the most important part out of all these capital according to Bourdieu. Why? Because जब embodied की बात करते हैं that हमारी जो कल्चरल नॉलेज और स्किल की बात मैंने जैसे कहा, ये हमारी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग या सोशलाइजेशन के साथ हमारी लैंग्वेज, हमारी प्रोफिशिएंसी और हमारी कंपिटेंस को एक्सप्लेन करता है। सो दैट मीन्स इवन यू आर फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्पेस, particular geographical conditions, but the knowledge and the skills you learn from your culture, that area's culture, so that becomes part of your competence. That becomes the positive aspect to reflect your knowledge, your proficiency. हम अपनी ज्ञान और अपनी जो स्किल है, अपनी जो ज्ञान की और ज्ञान के साथ हमारे जो कौशल है, ये जो कौशल की बात करते हैं वो चीज हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ है। सो दैट बिकम्स माय कॉम्पिटेंस बिकॉज ऑफ इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो ये हमें सिखाया गया है, देखा है, हमारी एजुकेशन में है, हमारे सिलेबस में है, हमारी एक्सपीरियंस में है। सो दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद उसकी बात को ऑब्जेक्टिफाइड की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्टिफाइड की बात करते हैं, then you find that how different books, different instruments, different cultural artifacts that also represent the cultural knowledge and the refinement. तो किसी फोक म्यूजिक, फोक इंस्ट्रूमेंट उस ट्राइबल सोसाइटी का, उस शहर का, उस परिस्थिति का एक एक रिफ्लेक्शन दिखाता है that how this area has a relationship with a particular instrument or a particular work heritage. So that explains also an important aspect of our capital. फाइनल इम्पोर्टेंट पार्ट जब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड की बात करते हैं, that how our degrees and diplomas it becomes an important aspect. जैसे किसी के पास आईआईटी की डिग्री है, एजुकेशन है, आईआईएम की डिग्री एजुकेशन है, so that becomes a capital, that it is something reflects that your importance and significance in terms of knowledge, credentials, educational certificates, degrees. तो हमारी एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए कैपिटल की तरह काम करता है, जब आपकी एजुकेशन इस तरह अच्छी जगह पे somebody is a product of IIT कानपुर, MIT institutions, या even best universities of our country or best schools of our country, so that becomes also an important aspect to understand the cultural capital. Thank you for watching Dhal sir classes.